Sit down, all of you. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में खड़े होकर संविधान दिवस के अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान के सभी महान नेताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह भारत के हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का पथ प्रदर्शक है। बाबा साहेब ने इसे एक ऐसा साधन बनाया जो हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान दिलाने की ताकत रखता हो। आज संविधान दिवस पर मैं इस बात को जोर देना चाहता हूं कि जैसे हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, वैसे ही हमारे कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संविधान ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को न्याय और समानता सुनिश्चित की। हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान इस दिशा में हमारे संकल्प का प्रमाण है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के आदर्शों को केवल किताबों में न रह जाएं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। हम अंत में मैं सभी सदस्यों और नागरिकों से यह कहना चाहता हूं कि संविधान के आदर्शों और को जीवन में उतारे और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनाएं। जय हिंद, जय भारत। The House is now in session. Today we gather to discuss the proposed changes to the reservation policy, focusing on fair representation in education and employment. I call upon the Social Justice Minister to present the details. Thank you, Speaker Sir. This proposed amendment revises reservation percentage, aiming to extend benefits to economically weaker sections across all communities while maintaining support. This policy promotes social equity by addressing economic disparity. Essential for an exclusive India. While we recognize historical disadvantages faced by certain communities, economic hardship knows no caste. We propose to balance opportunities by extending support to economic weaker sections, regardless of caste or religion. Of historical disadvantages faced by certain communities. Speaker Sir, in the history period, certain communities faces racism. Communities are divided into several caste groups. Communities are discriminated on the basis of religion. Communities are discriminated on the basis of economic conditions. We want to make
वन नेशन। Speaker sir, why are they thinking that this policy makes the nation one? सर, अगर हमारे देश के हर युवा, हर कम्युनिटी के लोग एजुकेटेड होंगे और सब एक समान होंगे तो इसी तरह हमारा देश एकजुट होगा और बहुत उन्नति करेगा। Sir, how is this policy for inclusive India? माननीय महोदय, हम अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो गरीबी और शिक्षा के कारण पीछे हुए हैं। हमें उन सभी वर्गों को एक साथ लाकर चलाना होगा जिससे हमारा देश की उन्नति होगी। Speaker sir, the opposition has serious concern about this policy impact on SC and ST communities. These groups have faced discrimination for centuries and the current reservation policies were designed to address that. The government must ensure that these new changes do not dilute their benefits. Speaker sir, what type of benefits diluted by government? Our government never diluted the benefit of the ST and SC communities. If our charity dilutes the benefits, please give us facts for that. Speaker sir, in the past 5 years, there are only 13% jobs for SC and 5.5% jobs for STs. The reservation policies mandates 22.5% reservation for SC and STs. For past 5 years, 334 SC and 166 STs were recruited for direct appointment in all India services. Directors and above posts, only 13% of 928 posts from SC and ST communities are diluted. To leave out certain disadvantaged group just because they do not belong to historical marginalized communities. Should not a modern welfare state address poverty as universal issue rather than focusing solely on caste? What type of impact will land on SC/ST communities by this policy? SC and STs are diluting their benefits. This is a biggest fear for them. Speaker sir, this is a progressive policy. We must address economic disadvantages wherever they exist. Many underprivileged families, regardless of caste, deserve equal support. This proposal seeks to balance social justice with economic equity. How this policy is a progressive policy, we want answer right now. Speaker sir, if this is not a progressive policy, then uplifting emergency country is progressive. Speaker sir, we fear this policy might unintentionally create conflict between communities. People from ST/SC backgrounds rely heavily existing on these reservations, taking away this belief vulnerable again. What type of fear the opposition leader? माननीय महोदय, इस पॉलिसी के अंदर हम ST/SC के राइट्स नहीं छीन रहे हैं बल्कि एक और सेक्शन ऐड कर रहे हैं। इसलिए इस कारण से इस देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। माननीय महोदय,
Speaker sir, while I support the idea of economic reservation, we are concerned about region imbalance. In certain state-specific communities dominate and their voice may be lost in the national policy. I request that the government regional consider quotas with this paper. हमने इस नीति में एसटी और एससी के आरक्षण को कम नहीं किया। हमने इस नीति में एक नए समुदाय को जोड़ा है। इस नीति में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है, जिससे उन पिछड़े वर्गों को भी हम साथ लेकर चल सकें। जब सभी वर्ग समान रूप से उन्नति करेंगे तो देश की भी उन्नति होगी। Regional imbalance do they mean? Imbalance that there is no fair opportunities for Christians, Muslims, Jain, Buddhists, etc. Based on caste reservation, not on gender. Speaker sir, I am not talking about the gender, I am talking about religion-based reservation. So religion-based reservation is also not written in our constitution. So I am suggesting that to remove the caste-based reservation and add the religion-based reservation. हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इनसे कहें कि ये मुद्दे की बात करें। Today's topic is reservation, not the thing that you are talking. So please focus on the today's topic. Speaker sir, I request the clarification on how the government plans to enforce these changes consistently across the states. Speaker sir, what type of clarification would they need? I want the clarification that ST and SC's reservation never be diluted by this policy. If they want clarification, then order them to keep patience. Speaker sir, we have formed an oversight committee to ensure transparent implementation. State-specific variations will be addressed to maintain a balanced representation without using disruption in local communities. Speaker sir, there is no transparency in any of their policies. On what basis you are saying that there is no transparency in our policy? According to their past policies, every time in every policy we found the corruption. Like electoral bond, there is no transparency in the policy of electoral bond. Speaker sir, opposition को ट्रांसपेरेंसी की याद तब आती है जब उनके सारे करप्शंस का रिकॉर्ड सबके सामने हो। इलेक्टोरल बॉन्ड एक लेजिटिमेटेड और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी प्रोसेस है जो पब्लिक फंडिंग को सिक्योर करने में मदद करता है, जबकि कांग्रेस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ब्लैक मनी और करप्शन का है। उन्हें अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। स्पीकर सर, यदि इलेक्टोरल बॉन्ड सही था तो बीजेपी ने उसका डेटा, एसबीआई ने उसका डेटा कोर्ट को क्यों नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को? बताइए, हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का टॉपिक रिजर्वेशन पॉलिसी है, ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड। Young people, which means almost about 420 million, comprising 29% of the total population, want fair opportunities, not favoritism. While we support helping disadvantaged, we also seek a merit-based approach, particularly in higher education and competitive exams. Speaker sir, how can a merit-based approach be implemented to ensure fair opportunities for all?
Speaker sir, minority communities which are challenges. This policy must explicitly ensure that religious minorities receive adequate support and opportunities. Thank you. Speaker sir, this policy overlooks gender-based reservation. Women, especially from disadvantaged backgrounds, face barriers in accessing education and jobs. We must ensure that the women benefit from the policy to create a truly inclusive society. स्पीकर सर, बात अगर ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी की हो गई हो तो विमेन सेफ्टी की तरफ भी ध्यान दें। Speaker sir, what they want to say by their statement? The government should focus to create India inclusive society. जी बिल्कुल नहीं, सरकार देश की महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर साल वुमेन क्राइम्स के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, ये नहीं घट पा रहे हैं। In 2011, only 5,076 cases are there, and in 2022, there are 1,702 cases of women harassment. They are not focusing on women's safety. The government has introduced so many schemes for women like women defense training, Nirbhaya fund utilization and many more. And the question is why women are not feeling safe? The answer of this question is our society. हमारा समाज, लोगों की सोच, लोगों का नजरिया, हमें उसे बदलने की जरूरत है। इस बात पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि सोशल चेंजेस आर नॉट लाइक केमिकल चेंजेस कि H2SO4 में HCl मिला दिया और हमें कुछ प्राप्त हो गया। ये सामाजिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा स्टेप है और हम इसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कि आप तो 70 साल से अपनी सरकार चला रहे हैं, हमें तो सत्ता में आए अभी 10 साल ही हुए हैं। आपने उन 70 सालों में क्या किया? And as I have just said, it's a very big step. And our government is taking useful initiatives for it. Thank you. बात रही कि हमारी सरकार ने 70 साल में क्या करा, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी एंटी पॉवर्टी पर काम हुआ, जब राजीव गांधी जी सत्ता में आए तो IITs का इवोल्यूशन हुआ देश में, NITs चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में सेफ्टी की बात हो रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमें। हमारे उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आप वो Your time is now over. You may sit down now. You will get time later. Otherwise, you will get out of this session. Speaker sir, in rural areas, lack of access to quality education and job opportunities is the biggest barrier regardless of caste. This policy should focus on improving educational resources and vocational training in rural regions. On improving education resources and vocational training in rural regions. Economically weaker section from upper caste do not benefit from existing reservation. This policy focus on economic disadvantage is a welcome change and it ensures support for all those who truly need it. In India, encourage domestic manufacturing and invites foreign direct investment (FDI). Secondly, Skill India Mission and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana aims to build the skills gap and making the youth employable in private job sector. According to data, we have SC population is about 17% and ST population is about 8.6 to 9%. We think these reservations would undo decades of progress. I urge the government to preserve strong protection for the late communities. The government allocates funds for ST but reports show significant underutilization. मान्य महोदय, ये हम पर ऐसे एग्जाम कैसे लगा सकते हैं? इनके पास कोई डाटा है? Speaker
As an urban youth representative, I want to emphasize meritocracy while I support reservation for the economical disadvantaged. We must also invest in quality education for all. Our nation progress depends on developing talent without barriers. The population in India remains one of the most disadvantaged. Any dilution of SC/ST reservation would disproportionately harm our communities. Tribal needs stronger affirmative action, particularly in remote areas. Speaker Sir, Tamil Nadu has successfully implemented state-specific reservation policies for decades, benefiting many communities. A one-size-fits-all national framework might undermine local systems like ours. Regional autonomy must be prioritized. Speaker Sir, बात यहाँ देश की है, राज्य की नहीं। Speaker Sir, the other backward classes makes up a large portion of population. While we welcome economic reservations, we urge the government to ensure OBC reservations remain intact and are not be overshadowed. Even OBC, even SC/ST facing problems in rural areas. This bill is a monumental step toward correcting the deep-rooted economic disparities that continue to exist in our society. Many communities have faced discrimination, and while reservation has been effective in caste-based disparities, it is equally important to provide equal opportunity to those who have been struggling in the face of economic hardship. This bill is a necessary evolution of our reservation system to ensure that no one is left behind. Speaker Sir, how this bill is a monumental step? Speaker Sir, reservation bill addresses not only social justice but also economic equity, a vital factor in driving our nation towards inclusive growth. This policy is not just an expense but an investment in our nation's human capital. As a finance minister, I assure the House that adequate funds will be allocated to implement this policy effectively. Lastly, I want to highlight that this bill does not compromise on existing protection for SC, ST and OBC. Instead, it complements them by addressing a broader spectrum for economic disparities. They are talking about reservation, what about taxes in our country? People are suffering from taxes. आम बिजनेसमैन इस टैक्स के बोझ पे दबाई जा रहा है। इनका इस बारे में क्या कहना है? इनसे पूछिए जरा। Speaker Sir, we have a big government and it needs to grow as the population grows. We could not collect enough taxes to pay all the bills. If we decreases taxes, then the condition will become worse. In such condition, will the opposition will pay the bills? We will surely decrease the taxes. स्पीकर सर, जैसी कि इन्होंने बात करी कि हमारे देश में टैक्स आ नहीं पा रहा है सफिशिएंट अमाउंट में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड भी बढ़ेगा अगर देश में, और फूड पे इन्होंने टैक्सेस लगा रखा है, जैसे चावल पे लगा रखा है, नमक पे लगा रखा है, तो टैक्स पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है टैक्स का? पूछिए। माननीय महोदय, जिन्होंने देश को लाइसेंस राज और करप्शन राज दिया, वो हमें इकोनॉमी में लेक्चर दे रहे हैं। Speaker Sir, India is currently the fifth largest economy in the world, estimated GDP of 3.94 trillion in 2024. India's rapid growth attributed to
Speaker Sir, economic equity contributes to our country economy and social stability in several ways. Equal opportunities. Economic equity ensures that all citizens have equal opportunities to utilize their potential to the fullest. Economic growth. Economic equity leads to economic growth as people with higher incomes can consume and invest more. Social stability. Economic equity also contributes to social stability as people with equal opportunities are more satisfied and peaceful. Education and healthcare. Economic equity also leads to improvement in education and healthcare as people with higher incomes can provide better education and healthcare to their children. In these ways, economic equity makes a significant contribution to a country's economy and social stability. स्पीकर महोदय, मैंने यहाँ पे टैक्स की बात करी है, यहाँ पे इकोनॉमिक इक्विटी की बात नहीं। इकोनॉमिक इक्विटी में हमारे देश की सरकार ने बहुत कुछ अच्छे कदम उठाए, ये बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन टैक्स के अंदर बहुत गलत हो रही है। इकोनॉमिक इक्विटी के बारे में जानना है और ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इक्विटी के बारे में नहीं जानना। पहले ने कहीं भी अच्छे से विचार विमर्श कर दिया है। विचार करके अपनी बात कहिए। स्पीकर सर, मैं विचार करके अपनी बात कहा है। मैंने ये चीज कही है कि इकोनॉमिक इक्विटी में हमारे देश की सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, इनिशिएटिव उठाए, लेकिन हम हमारे यहाँ पे टैक्स ही कर रहे हैं। इतना टैक्स क्यों लग रहा है? स्टेशनरी पे टैक्स लग रहा है, पढ़ने लिखने की चीजों पे क्यों टैक्स लगना चाहिए? ये चीज बहुत गलत हो रही है। अगर इनके पास जवाब नहीं है तो इन्हें बोलिए कि शांत बैठे रहिए। ये हम ही पे बात बोल रहे हैं कि आपने क्या करा है। आप इनसे टैक्स की पॉलिसी के बारे में पूछिए। The government acknowledges the different views presented here. This policy is about balancing historical injustices with fairness, not replacing one with other. We aim to uplift all sections of the society and ensure that opportunities are accessible to all. Thank you to all members for a constructive debate. It's time to vote on the proposed changes to the reservation policy. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, say no. No. The ayes have it. The proposed changes to the reservation policy are passed. Thank you to all for a constructive debate. This session of Parliament is now adjourned.